हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत ओडब्ल्यूएससी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2022-23 सिलेबस अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3 रे आउ किछि क्वेश्चंस नै कि आसीछि वीडियोटी कंप्लीट देखंतु आपनको एग्जाम रे निश्चित काम रे आसीबो तो चलंतु डेनो करिकि स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन हमें फर्स्ट दुईटा पार्ट रे 100 टी क्वेश्चन रिवीजन करिछे हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अपॉइंट करे तो करेक्ट आंसर हबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who described the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Constitution किए कहते देखो क्वेश्चन सब ओडब्ल्यूएससी रे ऑलरेडी आसी सारची आ ए आसीबार चांस मध्य अछि तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो के एम मुंशी द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कोठ अणा है फंडामेंटल राइट तो करेक्ट आंसर हबो यूएसए रु Who among the following has the authority to create a joint state public service commission for two or more states? का पाखे से authority अछि joint state public service commission तार करेक्ट आंसर हबो Parliament of India. What is the minimum age for contesting पंचायत elections in India? पंचायत इलेक्शन पे मिनिमम एज केते थिबा दरकार तो करेक्ट आंसर हबो 21 years. What are the three words added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तीनटा वर्ड कौन इंसर्ट करा जाइतिला preamble रे 42nd Constitutional Amendment Act रे 1976 रे तो करेक्ट आंसर हबो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ए जगह रे बहुत इजी अछि मने रखिया लगी बट ए जगह रे बहुत कंफ्यूजन मध्य क्रिएट हुए The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India consists of how many members? That's correct answer habo 6. Who has the authority to reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the President of India? Who has the authority to reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the President of India? The correct answer habo गवर्नर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दिया जाइए तो गवर्नर ऑफ द स्टेट हम करेक्ट आंसर या पूर्व क्वेश्चन बाय मिस्टेकली ए जगह आसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इट्स ओके नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर या को स्टेट रो बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो करेक्ट आंसर हम उत्तर प्रदेश रो Who among the following appoints the chairperson and the other members of the National Commission for Scheduled Caste? The correct answer is President of India. Which one of the following parliamentary committees has no representation from Rajya Sabha? Correct answer is Estimates Committee. Cantonment Board functions under the administrative control of. Cantonment Board functions under the administrative control of. Correct answer is Union Ministry of Defence. Union Ministry of Defence. A bill introduced by any member of parliament other than a minister is known as. A bill introduced by any member of parliament other than a minister is known as private bill. Who appoints the chairman of the State Administrative Tribunal in India? State Administrative Tribunal in India. Ki appoint करे? President of India. Who has the authority to appoint Lokayukta and Upalokayukta in a state? का बाके से authority अछि to appoint Lokayukta and Upalokayukta? Governor of the state. Who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha of India? Ex officio chairman राज्यसभा किए वाइस राज्यसभा ऑफ इंडिया सॉरी यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़ा भूल कर लिखी दीजिए कि हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे One second.
भाइस प्रेसिडेंट हवा कथा एटा मु प्राइम मिनिस्टर केमती करछि ठीक अछि एटा मु पीडीएफ रे चेंज कर देबी मु गोटे स्क्रीनशॉट खाली नै जाय ठीक अछि नेक्स्ट when did the supreme court of india come into existence supreme court केबे existence को आसिला इंडिया रो तो करेक्ट आंसर हो 1950 रे नेक्स्ट who among the following is the supreme commander of the indian armed forces supreme commander of the indian armed forces hochi president of india which of the following articles of the indian constitution deals with the contingency fund of india contingency fund of india related के आर्टिकल मेंशन करा जायछि आर्टिकल 267 इंपोर्टेंट रहइबो 267 अच्छा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिलेटेड के आर्टिकल मेंशन करा जायछि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिवे व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें जानि छे 5 वर्ष अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड केउ आर्टिकल पर्यंत राइट टू इक्वालिटी मेंशन करा जायछि तो करेक्ट आंसर हो यार आर्टिकल 14 टू 18 आर्टिकल 14 टू 18 when was the last fundamental duty added to the indian constitution last fundamental duty केबे ऐड करा जायतिला constitution रे तो यार करेक्ट आंसर हो 2002 रे who among the following described the directive principles of state policy as a novel feature of the constitution of india किए कहिथिले यार करेक्ट आंसर हो बी आर आंबेडकर ठीक अछि बी आर आंबेडकर which of the following acts is also known as the मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स केउ एक्ट एटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा नुह बट ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट which of the following acts is also known as the मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो केबे आस्तिला तो करेक्ट आंसर हो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 ठीक अछि 1909 ठीक अछि next who among the following is the first indian origin prime minister of the united kingdom ए क्वेश्चन बर्तमान आपन को मन रखिया पड़िबो नेक्स्ट 100 वर्ष पर्यंत कि ताठ भी अधिक जेतु फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम तो करेक्ट आंसर हो ऋषि सोनक हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए सुकुमार सेन which of the following articles of the indian constitution deal with the parliamentary system of government at the center के आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि parliamentary system of government at the center तो करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 74 and 75 आर्टिकल 74 and 75 who among the following is the guardian of the rights and privileges of the members of lok sabha who among the following is the guardian of the rights and privileges of the members of lok sabha the correct answer ho speaker of lok sabha when was the voting age reduced from 21 years to 18 years in india क्यों वर्ष तार करेक्ट आंसर हो 1989 1989 who was the president of the indian national congress at the time of independence of india तबले inc रो president के थिले तो करेक्ट आंसर हो जेबी कृपलानी who among the following takes part in election of the president of india मान को मधुर किए पार्टिसिपेट करे election of president of india तो करेक्ट आंसर कोन हो elected members of the legislative assemblies of the states elected members of the legislative councils of the states nominated members of Rajya Sabha, nominated members of Lok Sabha. तो correct answer हो elected members of the legislative assemblies of the states. ठीक अछि elected members of the legislative assemblies of the states. ठीक अछि how many Lok Sabha 1 second how many Lok Sabha general election have been held till November 2022 ए पर्यंत केतरा Lok Sabha election सरीची 2022 सुधा तो करेक्ट आंसर हो 17 टा मन रखिथिबे नेक्स्ट हो 18 नंबर the term socialist was added to the preamble of the Indian constitution through which constitutional amendment act socialist add करा जायतिला word टी को term को तो क्यों constitutional amendment act 42nd constitutional amendment act where is the headquarters of national human rights commission of india situated ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रू बिलोंग करोनी बट इंपोर्टेंट
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड तो करेक्ट आंसर हम न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कोडी अछि न्यू दिल्ली रे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेतले प्राइम मिनिस्टर के थिले जेतले फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा गला हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो करेक्ट आंसर हम इंदिरा गांधी द टर्म इंटीग्रिटी वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द क्यों अमेंडमेंट एक्ट रे इंटीग्रिटी वर्ड को इंसर्ट करा जाइतला तो करेक्ट आंसर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा क्यों आर्टिकल मेंशन करा जाइछि ग्राम सभा रिलेटेड तो यार करेक्ट आंसर हम आर्टिकल 243 क्लियर नेक्स्ट which was the last language that was given the status of classical language in India या तो क्यों लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज रो स्टेटस दिया जाइछि शेष रे तो करेक्ट आंसर हम हमरो ओडिया लैंग्वेज को हाउ मेनी जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव बीन कन्वेन्ड सो फार ए पर्यंत केतेटा जॉइंट सिटिंग हे सरछि तो करेक्ट आंसर हम तीनटा हे सरछि केतेटा तीनटा व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीआईएल ए टर्म रिलेटेड टू जुडिशियरी पीआईएल रो फुल फॉर्म कोन आमे जानि छै एटा यूएसए रु बरो करा जाइछि माने अना जाइछि माने कोन यूएसए रे प्रथम स्टार्ट हितला तार करेक्ट आंसर कोन बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया तार करेक्ट आंसर हो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ठीक अछि नेक्स्ट हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया ये तो करेक्ट आंसर हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर क्यों वर्ष कॉन्स्टिट्यूट हला तार करेक्ट आंसर हो 1966 द कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी in the Indian constitution was borrowed from the कोट होना जाइछि डीपीएसपी तो करेक्ट आंसर हो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू the working of the constitution that was set off in the year 2000 who was the chairman of the national commission to review the working of the constitution that was set up in the year 2000 तार करेक्ट आंसर हो MN Venkatachalya ठीक अछि who has the authority to remove the chairman of the Union Public Service Commission who has the authority to remove the chairman of the Union Public Service Commission तो यार करेक्ट आंसर हो President of India which schedule was added to the Indian Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act तो करेक्ट आंसर हम 11th शेड्यूल को ऐड करा गला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों आर्टिकल मेंशन करा जाइछि जोटा कि हमें बजट को जेतरे आर्टिकल 112 बजट वार तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नाही हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा सुकुमार सेन तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा किए एम अनंत शयनम अयंगर अच्छा फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जणेबे ठीक अछि तो ये थिला आउ 50 क्वेश्चन एक क्वेश्चन गुडी का आपन को एग्जाम रे निश्चित काम रे आसीबो आ बुक तो फॉलो करिवे जानि छंती लक्ष्मीकांत दैट इज एनफ थ्योरी आपण सेटू पढंतु आ क्वेश्चंस मु प्रोवाइड करिवि आपण को रिवीजन पई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करिवि जोटा कि आपण को नॉलेज गेन हबो आ एरिया मध्ये आपण को नॉलेज रे बढ़िबो ठीक अछि तो वीडियो री कंप्लीट देखिथिबारु धन्यवाद।